Dada Sham, Pyari Dadaji Sangat. Today again as we gather for our Guruvaar with Gurudev Satsang, again we are reminded of a very profound teaching of our dear Dada. We have chosen a very special video of Dada today where he shares illuminating insights that resonate deeply with our hearts. In the video, Dada is emphasizing the importance of spirituality over organized religion. He reminds us that every religion teaches us peace and harmony. He speaks of life as a pilgrimage, guiding us from one station to another, urging us to switch on the light of inner wisdom. Dada's words remind us always that true happiness comes from inner peace, a treasure far more valuable than any material possession. Now, let's think about something big that happened yesterday. India's Chandrayaan-3 mission landing on the moon's south pole. This is a very big win for India and shows what we can do when we work together with a clear goal in mind. And just as Dada speaks of the importance of inner exploration and self-realization, India's journey to the moon's south pole, it can be seen as an external manifestation, but of that same spirit of exploration. So today, as we delve into bhajans and immerse ourselves in Dada's teachings today, let's also take a moment to reflect on this incredible achievement by India and ISRO. Let it serve as a reminder that when we are guided by a higher purpose, be it in for spiritual quest or scientific explorations, we can achieve greatness. त इन शुभ ख्यालन सां असां अॼु जो सत्संग शुरू कंदासीं गुरु ब्रह्म मंत्र सां, पोइ गीता जो 12 अध्याय भज गोविंदम कंदासीं ऐं नूरी वचन आरती ऐं पोइ कीर्तन ऐं भॼन। त साथ ॾिजो, जुड़ियल रहिजो। दादा श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। दादा श्याम। दादा श्याम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। वेर भाव खां जो रहे सो परे, ऐं सभिनी जो मित्र। अभिमान ममता बिना खिम्यावान, दयालु रहे जो सदा संतोषी। ऐं सुख में ऐं दुख में आहे जो समान, यतन में रतन जो रहे तो पके निश्चवारो। मन बुद्धि मुँह में जो अर्पण करे, सोई भक्तमय जो प्यारो। सोई भक्तमय जो प्यारो। जिजे की न कहीं खान कहीं खेत जारे,
चिंता खुशी का न्यारो हसजना है के न कि क्रोध को सोई भक्तमय जो प्यारो सोई भक्तमय जो प्यारो इच्छा रहित जो पवित्र चतुर जो चिंता बिना जो करे तो सुधारो फल की इच्छा सब पिछी जो करे सोई भक्तमय जो प्यारो सोई भक्तमय जो प्यारो बिना हर्ष आई द्वेष त्यागे तो जो भलो आई बुरो चिंता रहित जो न उमेदू अरे सोई भक्तमय जो प्यारो सोई भक्तमय जो प्यारो शत्रु मित्र ईमान अपमान छद गर्मी आई सुख दुख सबिन में समाभाव रखे छो रहे राजी सबते निंदा स्तुति में सागी रीत हले छो धन नजर मिलकत बिना शांति को अस्थिर चित्त वारो सब्र में रहे जो सोई भक्तमय जो प्यारो सब्र में रहे जो सोई भक्तमय जो प्यारो अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो वछे शरण में जी सोई भक्तमय जो प्यारो सोई भक्तमय जो प्यारो अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो वछे शरण में जी सोई भक्तमय जो प्यारो सोई भक्तमय जो प्यारो ओम तत्सत ये श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो श्री कृष्ण संवाद जो भक्ति योग वारो 12 अध्याय पूरो जो दादा श्याम प्यारी संगत दादा श्याम here वक्त है श्री सुखमणि साहब जो श्री सुखमणि साहब सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन बिसराम okay 350 मनमूरख मनमूरख काहे बिललाये पूरब लिखे का लिख्या पाये दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तिसे जुता जो कुछ करे सोई सुख मान भूला काहे फिरे अजान कौन वस्तु आई तेरे संग लपट रहो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पथ सेती कर जाहे संधि में अर्थ मन मूर्ख काहे बिलाये पूर्व लिखे का लिखे पाए ए मूर्ख मना छो पियो तू विलाप करी
पूर्व लिखे या लिखित हिसाब मूजिब सब कुछ थो पाई। दुख सुख जो ॾींदड़ प्रभु आहे, न ॿियो को बि आहे। तंहिं करे तूं ॿियो सभु त्याग कर, उन प्रभु खे तूं चित में यादि कर। जेकी प्रभु करे, उन में ही पंहिंजो सुख को ॼाण। भूलियल थी तूं पियो भिटकी, भूलियल थी छो पियो भिटकी। ऐं नादान अजान बेसमझ नादान, कहिड़ी वस्तु तोसां गॾु आई है। पोइ लोभी पतंग वांगर माया में रस मोह मां छो तूं प्रीत पाती आहे। राम नाम जप हृदय में हाण, त पंहिंजे सच्चे घर अलख धाम में वञी पाए मान। दादा श्याम धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दादा श्याम धन गुरु नानक भज गोबिंदम। श्लोक 19 ऐं 20। भज गोबिंदम भजो रे भाई गोबिंदम। भज गोबिंदम भजो रे भाई गोबिंदम। तिन ही लोकन में हिक ही बेड़ी, गुरु कृपा जप करना देरी। संतन चरणन वे जरूर, वठ खास खजानो चरणन धूर। उठ जग अंजलि अखियां खोल, सब थई फानी गोबिंद गोल। भज गोबिंदम भजो रे भाई गोबिंदम। पत्थरन खेऊ पार पहुँचाइन, तारन हार प्यासे तारन। संतन चरणन वठ तूं ओट, चक्कर 84 की न तूं मोट। उठ जग अंजलि अखियां खोल, सब थई फानी गोबिंद गोल। भज गोबिंदम भजो रे भाई गोबिंदम। भज गोबिंदम भजो रे भाई गोबिंदम। भज गोबिंदम भजो रे भाई गोबिंदम। दादा श्याम, दादा श्याम। अॼु जो वचन श्री नूरी ग्रंथ साहिब मां सुफ़ो 1536, पेज 1536। बुद्धम शरणम गच्छामि। भारत में त चिमकियो तारो, तेज तना दी होए त न्यारो। मुल्कन में मशहूर प्यारो, बुद्धम शरणम गच्छामि। चिमके तारो सो चीन जापान, रशिया लंका हिंदुस्तान। अमेरिका जावा तुर्किस्तान,
Buddham Sharanam Gacchami. Mera nazar se ditai dukhi, lakh hazare kayao sukhi, achut dharyai ram rakhi, Buddham Sharanam Gacchami. Mehelat jevyo manj dhyan, Bodhi vark hath vartai gyan, Trishna visaye vyo bad nirvan, Buddham sharanam gacchami. Ajatho dam alakh manyare, दुनिया दुखिया के प्यो थो पुकारे, जोत में नूरी शालव्या, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि. दादा श्याम, Dada Sham. Thank The English translation: I seek my refuge at the lotus feet of Lord Buddha. A star rose in the land of Bharat, and unique was the radiance of that star. And the beloved became famous in countries far and wide. I seek my refuge at the lotus feet of Lord Buddha. This star shone in the lands of China and Japan, and also in the lands of Russia, Sri Lanka, and Hindustan. So also it shone in the lands of America, Java, and Turkestan. I seek my refuge at the lotus feet of Lord Buddha. With his glance of mercy, he looked upon the unhappy and suffering ones, and millions of them he made happy. In his mercy, he liberated the untouchables. I seek my refuge at the lotus feet of Lord Buddha. He forsook his palace and went into meditation, and he achieved enlightenment under the Bodhi tree. He vanquished desire and reached the abode eternal. I seek my refuge at the lotus feet of Lord Buddha. Today, he is gazing at us from the land imperceptible, and he is sending his calls to the unhappy and suffering ones. May he seat us in his radiance, says Nuri. I seek my refuge at the lotus feet of Lord Buddha. May he seat us in his radiance, says Nuri. I seek my refuge at the lotus feet of Lord Buddha. Dada Sham. दादा श्याम हींअर गॾिजी आरती कंदासीं ऐं पोइ भॼन कंदासीं. जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो. चरण कमल में सिर निवाऊं, उठत बैठत महिमा गाऊं. तू शिव शक्ति तू घनश्याम, तू ही है दिल दिल का धाम. जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो. तू ही पिता तू मेरी माता,
सत्य स्वरूप तू मेरे स्वामी, तू सर्वज्ञ अंतर्यामी। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। ज्ञान और ध्यान तू मेरी युक्ति, तेरे चरणों में मेरी मुक्ति। तेरे दर पर मांगे धूप, दासी अंजलि कीजे कबूल। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। Now we'll start with bhajans. There's a little change in the schedule. Manjuji, is it okay if you sing first? Can you hear me? Yes, now we can hear you. Yeah. Dada Sham. Dada Sham. दया कर अच्छी खोल दे तो, दया करे अच्छी खोल 10 में द्वार। खोले खोले पंजे मंदिर में विहार। खोले खोले पंजे मंदिर में विहार। दया करे अच्छी खोल 10 में द्वार। दया करे अच्छी खोल 10 में द्वार। सुरत के साजन शब्द में तू चार। सुरत के साजन शब्द में तू चार। चारे 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 एक अखर से खार। चारे 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 एक अखर से खार। दया कर अच्छी खोल 10 में द्वार। दया करे अच्छी खोल 10 में द्वार। संतन समागम बठूरे मरुहानी। संतन समागम बठूरे मरुहानी। हित काल चक्र में सब आहे फानी। हित काल चक्र में सब आए फानी। संतन समागम असाखे देखार। संतन समागम असाखे देखार। सफल जन्म थिए पंहिंजो दीदार। सफल जन्म थिए करे ही दीदार। दया करे अची खोल 10 में द्वार। दया करे अची खोल 10 में द्वार। फानी ही सब कुछ ही कंचन काया। फानी ही सब कुछ ही कंचन काया। फानी ही मंडल मोहिनी ही माया। फानी ही मंडल मोहिनी ही माया। ए जादूगर जी लगाए को जादू। ए जादूगर जी लगाए को जादू। लगाए को जादू। लगाए को जादू।
ए जादूगर अच्छी लगाए को जादू कद मन में लोरी करी तू तकाबू कद मन में लोरी करी तू तकाबू दया करे अजी खोल 10वें द्वार दया करे अजी खोल 10वें द्वार खोले खोले पंहिंजे मंदिर में विहार खोले खोले पंहिंजे मंदिर में विहार दया करे अची खोल 10वें द्वार दया करे अची खोल 10वें द्वार दादा शाह Dada Sham. Thank you. That was a beautiful bhajan. I will sing now to Sajan Rajan, Hindi version of that. तू साजन राजन मैं एक फकीर तू साजन राजन मैं एक फकीर तेरे दर पर विकार वहाँ यानी तेरे दर पे विकार वहाँ यानी तू साजन राजन मैं एक फकीर तू साजन राजन मैं एक फकीर तेरे दर पे भिखार वहायानी तेरे दर पे भिखार वहायानी तू साजन राजन तू साजन राजन तू शाहन का शाह मैं तेरे दर की दासी तू शाहन का शाह मैं तेरे दर की दासी तेरे दर्शन खातिर पल पल प्यासी तेरे दर्शन खातिर पल पल प्यासी इस दिल का चात्रिक ना कुछ भी चाहे इस दिल का चात्रिक ना कुछ भी चाहे मिठा नाम तेरा बारंबार गाए मिठा नाम तेरा बारंबार गाए दादल शाह 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 मिठा नाम तेरा बारंबार गाए तू साजन राजन मैं एक फकीर तू साजन राजन मैं एक फकीर तेरे दर पर विकार वहाँ यानी तेरे दर पे विकार वहाँ यानी तू साजन राजन तू साजन राजन निर्मल नाम तेरा अखंड अभियासी निर्मल नाम तेरा अखंड अभियासी मेरा तीरथ तकिया मथुरा काशी मेरा तीरथ तकिया मथुरा
पूरा काशी, निर्मल नाम तेरा गाए दियाए, निर्मल नाम तेरा गाए दियाए। एक दिन अंजलि तुझको पाए, एक दिन अंजलि तुझको पाए। तू साजन राजन मैं एक फकीर, तू साजन राजन मैं एक फकीर। तेरे दर पे भिकारन वहाँ आया नीर, तेरे दर पे भिकारन वहाँ आया नीर। तू साजन राजन, तू साजन राजन, तू साजन राजन मैं एक फकीर। तेरे दर पे विकारन वहाँ आया नी। दादा श्याम। And next we will go to Ganesh George. Dada Shyam. Dada Shyam. Shambhu
नमो सदा शिवो जय परमेश्वर जय भुवनेश्वर जय शिव शंकर पार्वती शंकर गंगा जटाधर करुणा शंकर पार्वती शंकर गंगा जटाधर करुणा शंकर नीलकंठ धर अखिलेश्वर धर जय शिव शंकर ओ महादेव शंभो नमो सदा शिव जय परमेश्वर जय भुवनेश्वर जय शिव शंकर शिव शंकर नटराज सुंदर हर हर शंकर शिव शंकर नटराज सुंदर हर हर शंकर जय डमरूवर जय कलेश्वर जय शिव शंकर नमो महादेव शंभो नमो सदा शिव जय परमेश्वर जय भुवनेश्वर जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर दर्शन Dada Sham, that was wonderful, Ganeshji. We missed you. And welcome back. Sorry, G, I couldn't hear that. Sorry, say again. I said we missed you. Welcome back. Thank you very Yeah. much. Sing one more bhajan. One please. more. Okay. Just 1 minute. Let me get my song ready here. सुख के सब साथी
सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी धोली, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा होया रंग सभी का, राजा होया रंग सभी का, अंत एक सा होई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। बाहर की तू माती बाके, बाहर की तू माती बाके, मन के भीतर क्यों ना जाके, उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मैली न धोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे
दादा श्याम। जीअं त तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे, कल्ह चमत्कार थियो आहे। असांजो चंद्रयान चंड ते पहुची करे झंडो झुलायो आहे इंडिया जो। ऐं इंडिया में ॾाढी ख़ुशी बहारी लॻी पई आहे, जीअं बहार थींदी आहे तीअं बहारी वांगुरु सभु को खिल ख़ुशी नाच गाना सभु पिया हलनि। इन करे ही भोजल जो हिकु कलाम आहे जंहिं मूं हिकु लाइन वधी आहे, त माफ़ कजो। हीअ आहे बहार ते, जीअं इंडिया में बहार आहे अॼु उन ते आहे। बादल आयो बहार मियाँ, कड़का यार वसण जी मियाँ। बादल आयो बहार मियाँ, कड़का वसण जी यार मियाँ। भारत जो चंद्रायन त्यों, पोची चंद ते झूलो झुलाए मियाँ। भारत जो चंद्रानी त्यों, पोची चंद ते तिरंगो झलाए मियाँ। बागन में आ बहारी मियाँ, कर को वसण जी यार मियाँ। बादल आयो बहार मियाँ, कर को वसण जी यार मियाँ। गुल गुलाबी कंवल कुमाणा, तोरे चमन चौधारी मियाँ। गुल गुलाबी कंवल कुमाणा, तोरे चमन चौधारी मियाँ। बादल आयो बहार मियाँ, कड़का यार वसण जी मियाँ। बादल आयो करे वसकारो, भर तूं बारियूं, खिड़न गुल गुलजार मियाँ। करे वसकारो, भर तूं बारियूं, खिड़न गुल गुलजार मियाँ। बादल आया बहार मियाँ, कड़का यार वसण जी मियाँ। बादल आयो यार मियाँ, कड़का वसण जी यार मियाँ। भोजल खे नित आस जाहे, भोजल खे नित आस जाहे, सुहिणा लहंदे तूं संभार मियाँ। सुहिणा लहंदे तूं संभार मियाँ। बादल आयो बहार मियाँ, कड़का वसण जी यार मियाँ। बादल आयो यार मियाँ, कड़का वसण जी यार मियाँ। कड़का वसण जी यार मियाँ। दादा श्याम, दादा श्याम। Thank you. Thank you. Dada Sham. Thank you, Bhagwanji. That was very beautiful kalam. Thank you. Now we will start Dada's Updesh with Hare Rama Krishna Dun. Hare Ram Dada Sham, Hare Ram Dada Sham, Hare Ram Dada Sham, Hare Ram Dada Sham.
Dada Sham, Dada Sham, Dada Sham, Dada Sham. Hare Krishna, Hare Ram, Dada Sham. Hare Krishna, Hare Ram, Dada Sham. Dada touched millions of lives, and even today his light burns bright. Here is an interview we did with him on his journey. I am just a simple person, a pilgrim, a wanderer, a vagrant of the Lord who keeps moving from place to place, from country to country, moving in quest of fellow pilgrims who may have that intense desire, that longing for the higher, the spiritual values of life. This has been my, I shouldn't say it is my effort, because everything comes from the Lord, but this is how He wishes to use me. You know, tell us about your journey, Dada. You know, you've seen different phases of India. You have, struggled like your community. You've moved out of your homeland. You came to Pune. You settled over there. You've been so closely associated with Sadhu Vaswani. How have you seen India change? India has changed considerably. The patriots of India who offered their lives and all that they had to break the chains, the fetters that bound their homeland. They had a different idea of the India which they were building. The India that we have now is not the real India. No. But I believe that this is a period of transition. It will change. And India, the soul of India, will assert itself. So the soul of India is God. Today we have forgotten God. Today it is as though we have thrown out God, thrown Him out of our homes and our educational institutions. Those are the two centers of character building. If you wish to build character, you have to work through these two centers. And it is character that builds a country. It is not money. It is not fame. It is nothing but character which builds a nation. I told you 2 years ago, I was in America, and there we had a press conference, and they asked me a number of questions. One of them was, what would be your advice to the average American? And I said, it would be, slow down your pace. Then they asked, what is the need of your own country? And I said, the greatest need of my own country is of men and women of character. Men and women whom the lust of office will not betray, whom the gains of office will not lead astray. Men and women who will not be hungry for seats of power, but who will use all the power they have in the service of India's teeming millions. This is what India needs today. When the British had left India, we became what we call secular. We are not secular. Secular does not mean
that you don't talk of God at all. Secular means that you are not partial to a particular religion. But what we have done is we have thrown God completely out of our educational institutions. My idea of secularism is to permit a person to move on whatever path he chooses to God. The paths are many. The goal is one. Let your brother move on a path which is different from yours. You should not interfere with him. That is secularism. But secularism doesn't mean not to talk of God at all. You've said a very beautiful thing the last time I spoke to you. You said we need more spirituality and less religion. Yes, the emphasis should be on spirituality. We do not want religions. Religions have really created feuds, wars, strife, hatred. We don't want that type of religion. We want true spirituality. I believe that each one of us, is born as a human being only to realize the fact that he is an immortal being. He is an immortal spirit. What God gives once, He never takes away. He has given us the gift of life. And He will never take away that gift of life from us. But the forms will keep on changing. This world is a school. Experience is our teacher. We get different sets of experiences. You get your own experiences, I get my own experiences. Because you have to learn a different set of lessons from the ones that I have to learn. True. Dada, you've studied many religions, and when you speak from different texts across religions. In your lifetime of study of religions, do you believe that all religions talk the same language and it is the way you interpret it? What is your message? I mean, how universal is religion? Essentially they talk the same language. But there are differences, there is no doubt, depending upon the place and the time that a particular religion was formulated. There are differences, but essentially the teaching is the same. Essentially, at the heart. Every religion tells you that you must live at peace with your brother. This is secularism. Don't impose your views on others. You follow your own view. You follow the light as it has been shown to you. The teaching is very simple. If you want it to be simple, the Gita says, get up in the morning, before you open your eyes, before you leave your bed, think of God. Repeat the word Om, or any other word which to you is symbolic of truth or God. Repeat it. Even if you do it once, it's enough. You get up, your eyes are closed, your mind is concentrated, and you repeat the word Om, and then get out of your bed. When you repeat the word Om, you have forgotten all the worries and fears that you had yesterday. It is as though you are beginning a new life. Every day
comes to me as a gift of the new life. I attend to my duties. The simple teaching is, do your duty. We are told in the Gita that even if your duty be an ignoble one, and the duty of another be a nobler one, you must not renounce your duty and attend to the duty of another. Death in the performance of one's own duty is the right thing. It's such a simple teaching. The father has his own duty, the mother has her own duties, the children have their own duties, the students have their own duties, the teachers have their own duties. If each one did, if each one were true to his or her duty, that is all that is needed to transform the world. It starts with each person. Tell me, Dada, you know, the last time I spoke to you, spoke about switch on the light from within. Take us through what it means to switch on the light. When you say switch on the light, what do you mean? Switching on the light comes later. First you do your duty, and gradually you understand, or perhaps you come in contact with the community which has dedicated itself to a life of the spirit, and you sit in silence for some time. This is very essential. A stage comes in the life of the seeker when he is asked to spend some little time. Every day and night cycle brings 1440 minutes. Out of this, just spare 15 minutes or spare 30 minutes. Find out a silence corner. The telephone must not reach you. Go and sit there in silence and try to take a dip within yourself. Even as there is this wonderful world around us, all around us are wonders. But there are greater wonders that are within us. We don't explore them. That is our difficulty. If only once you took a dip within yourself are layers, layer upon layer. Penetrate those layers, and you will find that which you will not be able to express in words. It goes beyond words. So what does one find when you dip within? Do you find peace when you talk about the spiritual quest? How important is finding peace within? For a lay person, what does it really mean? You find peace within. And peace, perhaps, is the richest treasure that humanity can have. You may be the sovereign of all the world, but if you don't carry peace in the heart within, you are restless. You are not happy. On the other hand, you may have nothing. You may own nothing. But if you have peace in your heart, you are one of the happiest of people on earth. That is why that holy man said 2000 years ago, nothing in the morn do I have, and nothing do I have at night. And yet there is none on earth wealthier or happier than I. Why?
because he had peace of mind. But today's life is so hectic for most people, Dada. We have made it. No, so what is your message to those people who are chasing dreams, chasing ambitions, who are constantly on the move, are jet setting all over the world, doing big deals, etc. What is your message to them? My message is a simple one. The message which I give to myself. Turn back to God. And these 4 words is all that I had to say. We have turned away from God, therefore we have turned away from the light. Therefore we are groping in darkness. We have turned our backs to the light. And in front of us there is the shadow, the darkness of our own shadows. We walk in that darkness. Therefore are we unhappy. All we have to do is to take a U-turn. We have to face the light. And if I face the light, there will be no darkness in front of me. The darkness will be at the back. When you talk about darkness, you're obviously talking about the worry and the fear that people live with. How do you move away from that fear and the worry? What is your advice to people? It is a matter of attitude. You need to change your attitude. If your attitude is always a positive one, and if you really believe that in whatever happens to you, there is something good which God is sending to you, your life becomes different. It's all a change of attitude. Our attitude is such that the least little thing fills us with fear. And when fear enters the heart, all joy goes out. Each one of us, we are made for joy. We are children of joy. But we have become children of darkness. Therefore, what we need is a strong will. We should develop a strong will. We should pray for a strong will. We should read the lives, the biographies of people whose will was strong. It's only a strong will and wisdom that can conquer this negativity. What are your views, Dada, on ambition and success? Do you think people are chasing the wrong goals in life? When you see people wanting to be wealthier, more successful, is our definition of success and ambition wrong according to you? I believe that humanity is only a station on our journey onward. We have come here to learn certain lessons, but an ambition and the like, they hold us captive. In the measure in which I can handle ambition in the right way, I rise. Then I move to another station, and then to a third station. This life is a pilgrimage. It takes us from one station to another. So switch on the light, you say. Thank you, Dada. Thank you. Thank you so much.
Thank you. तू ठाकुर तुम पैरदा सजिय पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घने रे। तुम्हारी गत मित तुम ही जाने, नानक दास सदा कुर्बानी। तुम्हारी गत मित तुम ही जाने, नानक दास सदा कुर्बानी, सदा कुर्बानी, सदा कुर्बानी। दादा शाह। दादा श्याम वाह वाह जित विहारी तू, फजल नूरी निहारी तू। शुक्र आहे शुक्र तुझो, शुक्र आहे शुक्र तुझो, शुक्र आहे शुक्र तुझो। जेॾो तुंहिंजो नाम अलामत जब हो जाई मंगा, रे थंबे रे ठूणे तू त छप्पड़ तू छा गुजारो जो मालूम तो खे सब की हेरा हेरा। दाता तू न छड़ी ओ मात जिया तुझे आसरे, सबई पारू सूरजू ओ अञा गोरी तोता, ओ हिक तू न छॾजांइ ॿियो मुल्क मटियो तोता। तुंहिंजे गंज में कमी कान काई, तुंहिंजो दर सखा जो खुलियल सदाई। करी शाह प्यादा नी प्यादन खे शाई, जेका तुंहिंजी मर्ज़ी थींदी नेठ साई, जेका तुंहिंजी मर्ज़ी थींदी नेठ साई। अचे जेको तो वञे की न खानी, जड़ी आस जंहिंजी तड़ी तू पुॼाई, जड़ी आस जंहिंजी
Dada Shyam, Dada Shyam. Dada Shyam, Jalan ji mel thei, jale vat joli, janavaru data, Mahadev aaye, palav jeke paaye, tujhe dar te aaya, उन जूं तो आशूं में धूप जाई, कटे कष्ट तन जा मन जा, वठी पंहिंजे हथ सां साईं दग लगाई, ऐरोनाथ में जो महादेव आए, भोलानाथ आए, जलन जी मैल थई, जले वठ जोली, जन वारो दाता, महादेव आए, भोलानाथ आए, दादा श्याम आए, दादा श्याम. Ganesh, you're on mute. Ganesh, unmute. गणेश जी आवाज नहीं आ रहा है, यू आर म्यूट. प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है. प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है. तकलीफ और तंगी में नूरीक तू ही मददगार, उठाए हैं अंजलि के जन्मों के सारे भार. करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है. करते हो तुम ओ दादा, मेरा नाम हो रहा है. करते हो तुम ओ दादा, मेरा नाम हो रहा है. दादा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है. दादा श्याम. God, thank you for the food we eat. God, thank you for the songs we sing. God, thank you for the friends we meet. God, thank you for everything. Dada Sham.